So welcome guys, this is Komal Sandhu and today we are going to learn about the computer networks. आज हम कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे और इसमें जितने भी आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं, ये यूजीसी नेट के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सब हम कवर करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं कि आउटलाइंस हम क्या क्या इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा आएगा सिलेबस आएगा यूनिट 1 का। देन इसमें जब आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स आप देखोगे तो उसमें सीओज इंट्रोडक्शन होती है। सीओज इज कोर्स आउटकम्स, जो भी आपके कोर्स के आउटकम्स रहते हैं उनको हम यहाँ पे रीड करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज योर टॉपिक इंटरव्यू। टॉपिक ओवरव्यू रहेगा आपका, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द प्रेजेंटेशन विल कवर and importance on key objective summary and references. Now let's get start with the line. So our first objectives are understand data communication concepts. So in communication, what communication means? Communication is like you there are so many things that every device, every nodes are communicating with each other. अगर आप देखो तो हर चीज एक दूसरे के साथ यहाँ पे कम्युनिकेट कर रही है। ठीक है जी, जैसे कि हम नेटवर्क का क्या मतलब है? नेटवर्क मीन्स कि आप लोग एक दूसरे के साथ अगर बातचीत कर रहे हैं तो आपका एक नेटवर्क है। लाइक दिस, in computer terms we can also date the devices that are communicating with each other. These are also are the network. So understand the data communication concept. इसमें आप क्या क्या हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। डिजिटल एनालॉग ट्रांसमिशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन प्रोसेसेस क्या होती हैं। हम पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन को कंपेयर करने वाले हैं। सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या उसको हम कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। इसके अलावा हम मोड्स के ऊपर भी बात करेंगे। सो सिंप्लेक्स हो गया, डुप्लेक्स हो गया एंड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होती है, यूज केसेस ऑफ ईच कम्युनिकेशन मोड्स क्या होते हैं, right? And types of network also you have. So LAN, MAN, WAN, you have heard about this in school times also. आपने स्कूल टाइम पे भी ये पढ़ा होगा कि LAN, MAN, WAN क्या होता है। And other, they are the types of networks, their structure, their scale, their applications, all things we are going to cover in this video. So video को end तक जरूर देखना। Let's get started. तो सबसे पहले अगर आप बात करें तो यूनिट 1 का सिलेबस में हमने डिजिटल और एनालॉग ट्रांसफर। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। व्हाट आर द सीओज, कोर्स आउटकम्स क्या क्या रहेंगे इसमें आपके। यहाँ पे लेवल 1 आप यूज करोगे। लेवल 1 में आपको क्या करेगा कि डेटा कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट आप रीड करोगे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के। सेकंड CO2 आपका लेवल 2 रहेगा, कंपेयर करेगा नेटवर्क इन रेफरेंस मॉडल से। देन CO3 एंड CO4। नाउ द नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन। होती क्या है डेटा कम्युनिकेशन, आइए जानते हैं। सो डेटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन devices over a transmission medium, ensuring accurate and efficient delivery. So data communication क्या होता है? डेटा कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बीच में एक्सचेंज ऑफ गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम सिंप्लेक्स डिवाइसेस टू कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस। डेटा कम्युनिकेशन हमारी जो डिवाइसेस के बीच में, सिस्टम्स के बीच में या यूजर्स के बीच में हम अपने डेटा को एक्सचेंज करते हैं। सो दिस इज द डेटा कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे आजकल की डेट में हम अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें हमारी जो ये बैकबोन बन चुकी है। तो इस डेटा कम्युनिकेशन के बगैर हम कुछ भी आजकल की लाइफ में, आजकल की टेक्नोलॉजी में हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो कनेक्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम सिंपल डिवाइसेस टू कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, राइट? सो दिस इज डेटा कम्युनिकेशन। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंस क्या है डेटा कम्युनिकेशन की? प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन डिवाइसेस इनेबलिंग ग्लोबल कनेक्टिविटी। ग्लोबल पे आप इस डेटा कम्युनिकेशन से या नेटवर्क से एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं। पावर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक इंटरनेट एंड IoT। इंटरनेट और IoT के थ्रू आप क्या रहते हैं, यहाँ पे कनेक्ट रहते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिजिटल एंड एनालॉग ट्रांसमिशन। तो डिजिटल एंड एनालॉग ट्रांसमिशन, what is digital and analog? Analog transmission is continuous signal from audio, continuous signal for audio and video. So example AF FM radio,
ट्रेडिशनल टेलीफोनी, जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं जिसमें ऑडियो वीडियो आती है, तो उसको हम ट्रेडिशनल टेलीफोनी बोलते हैं, राइट। जो पहले के ज़माने में आपकी जो सिग्नल्स होते थे वो हमारे एनालॉग सिग्नल्स होते थे। तो डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं? डिस्क्रीट बाइनरी सिग्नल, जो कि 0 की 1 की फॉर्म में आते हैं, लाइक इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर कम्युनिकेशंस हो गए। जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो आपकी लाइक दिस, ये ऐसे, दीज आर दी एनालॉग सिग्नल्स। एंड ट्रांसमिशन सिग्नल्स लाइक 0 and 1, so these are the, if it can be 0, it can be 1. If it is 0, one time it is 0, another time it is 1, right? Then 0, then 1, then 0, then 1, then 0, then again 1. So these are the digital transmission signals. So modem converts digital signals to analog and vice versa. Enables data transfer over traditional telephone lines. Modem क्या करता है? आपके डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। Next is parallel and serial transmission. So what are parallel and serial transmission? So parallel transmission is multiple bits transmitted simultaneously. Parallel transmission में क्या होता है? मल्टीपल बिट्स आप एक ही टाइम पे उसमें ट्रांसमिट कर रहे हो। एडवांटेज क्या है? हाई स्पीड है, शॉर्ट डिस्टेंस है, डेटा ट्रांसफर विद इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर ही आप कोई भी एक जगह से डेटा दूसरी जगह में पेस्ट कर रहे हो, या फिर आप उसमें डेटा कुछ डाउनलोड कर रहे हो, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द पैरेलल ट्रांसमिशन। सो सीरियल ट्रांसमिशन इज बिट सेंट वन एट अ टाइम ओवर अ सिंगल चैनल। एक चैनल के ऊपर आपने अपने बिट्स को सेंड करते हैं। सो इसकी एडवांटेज क्या है? ये बहुत ही रिलायबल होता है और लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर ये वर्क करता है, लाइक यूएसबी एंड इंटरनेट के ऊपर आप कुछ अगर किसी को सेंड कर रहे हो, लाइक व्हाट्सएप के थ्रू आप कोई वीडियो शेयर कर रहे हो, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द serial transmission. Next is synchronous and asynchronous communication. So this is very important term. What is synchronous? Synchronous is data sent is continuous stream. Synchronous means एक ही लाइन में आपका जो continuous stream में आपका डेटा जो है वो सेंट होता है। सिंक्रोनाइज्ड बाय अ क्लॉक, कुछ क्लॉक टाइम आपको दिया जाता है, उसी कंटिन्यूस स्ट्रीम के अंदर आपका जो डेटा है वो सेंट होता है। एग्जांपल, रियल टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप करते हो, तो लाइक आपने कोई मीटिंग रखी है ऑनलाइन, कोई ऑनलाइन वीडियो है, या फिर ऑनलाइन आप कुछ भी आप गूगल मीट कर रहे हो या कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, सो दीज आर दी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, जो कंटिन्यूस आपका चलता रहेगा, डेटा सेंट होता रहेगा। उसके में आपका नेट भी यूज होगा और आपके डिवाइसेस के ऊपर आपकी डेटा कम्युनिकेशन भी होगी। सो दिस इज द सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज asynchronous communication. Data sent in discrete packets with start stop bits. डेटा क्या होता है? डिस्क्रीट पैकेट्स में अंदर सेंड होता है, लाइक उसमें एक बार जाएगा, फिर स्टॉप होगा, फिर जाएगा, फिर स्टॉप होगा। सो दीज आर दी एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। इसकी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, एसएमएस करते हो आप या फिर ईमेल करते हो। Next is modes of communication. Well, now the next question is, what are the modes of communication? So modes are very simple, like simplex mode. First mode is simplex mode, one way communication. This is the one of the basic mode of the communication is simplex mode, one way communication. Like you are just sending the data in one way. If you are sending, then you are just sending. If you are receiving, then you are just receiving. So it's the example of this data is television broadcasting. Now another mode is half duplex, that is two-way communication, but only one direction at a time. Two-way communication, like, but you can send and receive at a time, but only one direction. At one time you can send and second time you can receive, but एक टाइम पे आप उसको सेंड कर सकते हो, रिसीव सेकेंड टाइम पे उसको आप रिसीव कर सकते हो। इसकी एग्जांपल अगर आप लोगे तो दिस इज वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी इज द एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स। एक टाइम पे आप मैसेज सेंड कर रहे हो, at that same times the receiver is waiting for the message, and after that the sender is receiving the message. The sender is sending the message to receiver, and
receiver is waiting for the message. Another time, uh, receiver is sending some message to the sender and sender is waiting at that time, right? So these are the two-way communication, but not at the same time, on one direction at a time. Now other example is full duplex. Full duplex means simultaneous two-way communication. Simultaneously two-way communication, you are sending and you are receiving at same time, right? Example, telephone calls, you are sending something and you are receiving something at the same time. So this is the mode of communications. First is simplex, half duplex and full duplex. So these are the three modes of communication. Next topic is applications of data communication. Now what are the applications of data communication? So first application is networking. Concepts like serial transmission, full duplex communication are integral to computer networks, LAN and WAN. So networking is like, इसमें आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हो लाइक लैन, लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर या फिर वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर, राइट? सेकेंड एडवांटेज इज telecommunication. Modems and synchronous communication ensures efficient data transmission over phone lines and fiber optics. Telecommunication is the one of the most basic application of the data communication. Through we can send data through our phone, through our phone lines or fiber optics, right? Next is IoT and smart system. Asynchronous serial communication concepts, IoT devices to the central servers. So there are so many IoT devices. You can remotely use that IoT devices, and you can see there is a communication between the device, between the two devices and a user that is remotely using that device, right? Another is industrial automation, parallel synchronous communication used in high speed control system. So there are so many control systems, so many IoT devices that are using in the industrial automation. So these are the, they are using the parallel and synchronous communication. Another application is multimedia. Digital transmission enables high quality audio and video streaming over networks. So digital transmissions, what they help us to in high video quality and video streaming over the network. So these are the main applications of the data communication, where you are using the networking, telecommunication, IoT, smart systems, industrial automations, and multimedia. So next is what we have read in this slide. We have done in this video. The summary is here. Digital or analog systems method support various communication systems and transmission types and modes, optimize data transfer for different scenarios. Thank you so much.